ठीक है, ओके, तो 1 मिनट ओके, तो गुड मॉर्निंग। Correct since 2009. And before I introduce today's speaker, there is an announcement on coming Saturday, that is 26th, we are having National Science Day celebration at KIFR. So you are welcome to visit here on that day and visit the lab and see it. And now, today, our speaker is Rohit. It's a great pleasure to introduce Rohit Bhatt. He is an integrated PhD student at KIFR, and very soon he will be graduating. And today he is here to tell us about what motivated him to do what he has done and the relevance of his work to the science and society at large in coming times. Okay, sorry. Just a minute. Yeah, start. You're good. Hide the. Okay. Good morning, everyone. Today I'm going to discuss a thing which I title as powering tomorrow's world. Now, what I mean by powering tomorrow's world, that if we want to run these luxury items, things, we want to run cars, laptops, anything, we need energy. And that's what I mean by powering. So the question is how we are going to power all these things. So forget about these luxury items, even like a single bulb, we need energy. So that energy which we are right now obtaining is through this fossil fuels. Fossil fuels include coal, petrol, diesel, and इनके help से we get energy. Now there is an issue with these fossil fuels, problem इनके साथ. So that problem is they emit CO2, sulfur dioxide, NOx, some gases which is poison for our environment or us also. Why that is a concern? Because if you look at how much CO2 we are emitting and how much CO2 is present in the environment, it is directly correlated. So the thing which I want to say कि जो CO2 का amount बढ़ रहा है वो directly जो हमारे uses आ रहा है उसी से आ रहा है. And one more correlation is the temperature. अगर if you look at the Earth average temperature, वो increase हो रहा है day by day. So there is a very nice correlation between these two things, which suggests us कि CO2 का amount increase होना leads to increase in environmental temperature, and which leads to melting of glaciers. All these concerns are coming because of that thing. So almost अभी तक 1 degree rise हो चुका है, but 1 degree rise is quite a bit. Now, because of these things, we need a clean fuel. And what could be the clean fuel? For that, let's first think about what is the problem with the fossil fuel. Fossil fuel के साथ problem क्या है? Fossil fuel generally made up of two elements. One is carbon, one is hydrogen. It's like carbon, you can call it hydrocarbon. And when you do the combustion, through combustion we get the energy. When we जब जलाते हैं तो then we get an energy. So in the presence of air, because air contains oxygen, in that condition the fossil fuels burn and use water and CO2 and heat. Heat is the energy. So energy मिला, but उस energy के साथ में हमें
water मिला और carbon dioxide मिला, and that carbon dioxide is actually जो problem कर रहा है. तो problem solve कैसे किया जा सकता है? Contain only hydrogen, there is no carbon. तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फ्यूल का सोर्स हो जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो, then what can be done कि जब हम कंबशन करेंगे then it gets converted into water and heat. There will be no CO2 because there is no carbon. But if you look at कि हाइड्रोजन कहाँ अवेलेबल है एनवायरमेंट में, तो सबसे पहला चीज आता है फॉसिल फ्यूल. हाइड्रोजन प्रेजेंट ही कार्बन के साथ है. तो अगर कार्बन के साथ प्रेजेंट है, so how we can generate hydrogen? We can put some high temperature pressure condition under which these things can be converted. This fossil fuel को convert किया जा सकता है hydrogen and CO2 में. But the problem again, to generate this fuel, we are again emitting CO2. Now this fuel is clean. When इसका combustion करेंगे, we will get an energy and a byproduct water only. There will be no pollutant. But उसको generate करने में we are getting CO2. That itself a problem again. So that's why we call this particular process, and this process से हमें hydrogen मिला, we call it grey hydrogen because it is polluting our environment. So there is a type of hydrogen actually. One is defined as a grey hydrogen, जिसके synthesis में we are emitting CO2. Now what we can do, we can capture this CO2. जब release हो रहा है, जब हम fossil fuel से जब making this hydrogen and CO2, we can capture during that process. And if we capture that thing, then we call it blue hydrogen. So that's how you can generate hydrogen through fossil fuel itself. But इस वाले approach में क्या होगा? CO2 capture कर लिया हमने. अब वो हमने delay कर दिया उस process को, capture किया क्योंकि वो present तो रहेगा environment में. बट कैप्चर करके किसी वे से स्टोर करके रखेंगे, बट वो एग्जिस्ट कर रहा है. बट व्हाट वी वांट इज अ ग्रीन हाइड्रोजन. मुझे ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए. दैट मींस कि जो CO2 एमिट ही ना करे. मुझे एक ऐसा प्रोसेस चाहिए थ्रू व्हिच आई कैन जनरेट हाइड्रोजन और देयर विल बी नो CO2 एमिशन. ओके, तो व्हाट कुड बी द अदर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन? आई टोल्ड यू कि हाइड्रोजन तो मिलता ही हमें फॉसिल फ्यूल के साथ में. तो एक और जो सोर्स है वो है वाटर. यू नो कि वाटर तो हर जगह प्रेजेंट है. विद द सी वाटर ओनली. तो वाटर प्रेजेंट है. व्हाट वी कैन डू, सम हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन यू कैन इमेजिन राइट नाउ, जिससे हमें वाटर को स्प्लिट कर सकते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगेन. So now we can use this thing, hydrogen, to run our future things. Now the issue is this high temperature and pressure condition. Again, अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? अभी जो मिल रहा है हमें वो फॉसिल फ्यूल से मिल रहा है. तो again then it's a problem. I can't use these conditions. So what I can do, I can use sunlight and material. That is the concept I am going to talk today. कि कैसे sunlight and material का use करके simply we can split this water into hydrogen and oxygen. What we need now, just a beaker. You can put some water into it. You need one material and sunlight. Just shine some light on that beaker. You will get hydrogen and oxygen. Now, how can that thing can be done? For that, we pour that material as a catalyst or photocatalyst. उसको हम कैटलिस्ट या फोटो कैटलिस्ट बोल लेते हैं. कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं. तो वाटर स्प्लिटिंग को एनहेंस कर देगा. वो वाटर कन्वर्ट बहुत ज्यादा होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर. एंड द एनर्जी इस प्रोसेस को करने के लिए जो मिल रही है वो सन एनर्जी. नाउ देन हाउ दिस फोटो कैटलिस्ट थिंग वर्क्स एक्चुअली, लेट्स डिस्कस दैट थिंग. तो फोटो कैटलिस्ट के अंदर एक्चुअली फोटोकैटलिस्ट मिलके बना होता है मटेरियल से. एंड मटेरियल जो मिलके बनते हैं मोस्टली ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट ओनली. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक ही एलिमेंट भी हो सकता है.
and जो एलिमेंट्स होते हैं दे कंटेन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, एंड जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं because of these only we able to do whatever thing I told you before slide. So electrons कैसे करते हैं? तो होता ये है कि whenever they present into the material, they present in some energy state. So we can call some of the electron in low energy state, and if you give some energy to the material through light, through heat, whenever you increase the temperature, the system gets heat up, na? It gets heat up because electrons का energy मिल रहा है, and if they get energy, they can go into some high energy state. So I am drawing some cartoon जहाँ पे ये material जो white जो दिख रहा है, and initially your electron are in low energy state, and जैसे ही हमने light में क्या sunset, these electron can go into high energy state. बट साथ में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन टू हाई एनर्जी स्टेट, तो कहीं से इलेक्ट्रॉन मूव किया ना, तो रिलेटिवली उस पोजीशन पे यू क्रिएटेड अ डेफिशिएंसी, तो वहां पे डेफिशिएंसी हो गया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, होल इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, इट्स अ नेगेटिव चार्ज, so we get these two charge carriers. Now what you can do, you can put your water into that thing, and this water take these electrons, this high energy electron. If the water takes this high energy electron, if the water takes this hole also, what I mean by this hole, यहाँ पे water electron दे देगा hole, यहाँ पे material electron देगा hole को. So then you can convert the water into hydrogen, because making hydrogen from water is a reduction reaction. It takes electron only. So you just need to find a path to give an electron to water. So अगर हमने water दिया, water and then in the other side you will get oxygen. That's how you can generate hydrogen and oxygen from the water with the help of sunlight and a material that we call. Okay. Sorry. Why should the water absorb electrons? Otherwise, electricity neutral. Why should it? Okay. So, but you can understand this thing also have a charge. We call it partial charge actually. This X is bonded with the oxygen. Oxygen is considered to be very electronegative element. It's a kind of element which try to pull electron toward itself. So अगर वो electron लेगा तो hydrogen will become some positive charge. So you will get a positive charge of H plus. So then you can give an electron of some energy to that H plus charge, and that's how this H plus charge gets converted into like a hydrogen atom, which becomes an oxidation state of 0. That's how you get a neutral thing. Okay. Then what is the issue? Whatever thing I told you, these things are known in the literature from 1960s or 1970s. People are doing research and they find a pathway to split water into hydrogen and oxygen. इसको known, but then तो वहां पे एक इश्यू जो एक्सिस्ट करता है होता जो वाटर यूज कर रहे हैं, तो जो वाटर यूज किया वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो हम प्योर वाटर यूज करते हैं. So we are using pure water, but I mean by water that contains only water, it doesn't contain any electricity. Yes. On Zoom, could you change the microphone to this C9 to B? The apparently Bluetooth is not working. Go back to the Okay, just a second. select the top. See microphone. C9 and speak a bit loud. The microphone is in the back. Okay. So they are using pure water. Now, if you look at हमारे पास source क्या है, water के available sources. Just a second. तो available sources जो हमारे पास available है वो है sea water and fresh water. Fresh water से मतलब मेरा जो drinkable water है, can you imagine? क्यों उसमें कोई ions नहीं present होते, because sea water contain lot of iron into it. You see,
These are the type of ions it contains. Sodium chloride, we get salt जो हम लोग खाते हैं, that we get from the seawater itself. तो उसके अंदर बहुत सारे ions present हैं and impurities present. तो होता ये है कि जो सी वाटर होता है उसमें काफी चीजें, बट फ्रेश वाटर काफी जो जो नॉर्मली अक्सर वर्क होता है वहाँ फोटोकैटालिसिस का, that work is going on pure water only. अब प्योर वाटर में क्यों हो रहा है? बिकॉज इस सिस्टम में, इस कैटालिटिक स्कीम में जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, when you put ions or impurities into it, what happens? These ions comes and surround this catalyst. मैंने आपका आकाश में डाला ions वो catalyst surround कर दे, and then water is not accessible to that catalyst. उसके सरफेस पे पहुंच नहीं पा रहा. अगर वाटर नहीं पहुंच पाएगा, then जो कैटालिसिस है ये नहीं हो पाएगा. इसलिए होता जनरली क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ आयंस ये कैटलिस्ट जनरली लोअर एक्टिविटी को शो करता है. तो आपका हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयंस. दैट इज द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम था काफी टाइम से. तो एंड हमने यूज तो सी वाटर नहीं करना, क्योंकि अवेलेबल सोर्स ऑफ वाटर हमारे पास जो है दैट इज सी वाटर. So what we have done actually, हमने जो मटेरियल लिया that itself is iron. What I mean by iron कि उस मटेरियल में ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट है. तो सी वाटर में आयंस प्रेजेंट है, ये प्रॉब्लम हो रहा था. एंड दे सराउंड द कैटलिस्ट एंड फिर हमें हाइड्रोजन प्रोडक्शन नहीं मिलता. तो बट वी हैव चूजन कि हमने एक ऐसा मटेरियल चूज किया जो itself आयंस कंटेन करता है. So whenever you put ions into that system, those ions goes inside your catalyst. वो penetrate करते हैं. So if they penetrate your catalyst, they goes into the catalyst. And the good thing about our catalyst is the catalyst works when those ions are present. So that's how we are able to solve this problem. And in the presence of ion, what we have observed, we can generate more number of ion energy transference and mole, and then you can do a lot of water reduction. So that's how you are able to generate more amount of hydrogen in the presence of CO. And what we have observed, this is our result. The right side one. That in the presence of water, the hydrogen production, and I'm plotting the hydrogen production on the y-axis. कि amount somewhere यहाँ है. But when you do your hydrogen production, मेरे लिए कितना hydrogen मैंने generate किया है, same period of time के लिए. In the presence of sea water for our material increase, it get augmented by 8 times. इसका 8 times बढ़ा. और यहाँ पे जो पहले previous वर्ग होता है, and then measure कि how much hydrogen is getting produced, वो decrease होता जा रहा है. So with the time, it depends कि कौन सा concentration use करते हैं, and they use only NaCl. हमने जो सारा box stands out in the presence of this all these ions, our system can do water reduction, and it can do more efficiently than in pure water. Then it's a good catalyst. So then catalyst जो सी वाटर में हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है, अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकता है, but there are some other problems. But are those problems are want to happen. What is your exact ratio of water required to make a certain amount of fuel? Certain amount of Fuel, hydrogen. So how much hydrogen actually I mean be utilized from say 1 so liter. if you want to get a number कि 1 liter of water में कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो सकता है. No, I mean how much hydrogen can actually hydrogen in 1 liter. How much energy? Okay, so from if you go by number की hydrogen and hydrogen में energy कितना present होता है. तो one number I can give right now. Suppose करो आप 1 किलोग्राम हाइड्रोजन लेते हैं, 1 kg हाइड्रोजन जितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एंड 1 kg कोल मतलब जैसे जो
एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो 1 kg ऑफ हाइड्रोजन से ज्यादा एनर्जी, तो अगर सपोज मैंने यहाँ गैस इंजन यूज किया विद हाइड्रोजन एंड पेट्रोल, तो 1 किलो में मैं ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पा रहा हूँ हाइड्रोजन के केस में। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसीलिए हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है। So then how much water is required for 1 kg of hydrogen? सो दैट डिपेंड अपॉन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, दैट डिपेंड अपॉन कि कितना अच्छा कैटलिस्ट है तुम्हारा, ये जो कैटलिस्ट है कितना एफिशिएंट वर्क कर पा रहा है, कितनी देर तुम उससे प्रोड्यूस कर रहे हो, वो नंबर्स का मुझे दैट्स गुड। नाउ द प्रॉब्लम इज कि व्हेन यू आर शाइनिंग द लाइट generating this ball and electron, then you can do the water reduction, you get hydrogen, and you can do the water oxidation, you get oxygen. When you are shining the light, but what about the night? जब रात होगी तो there will be no sun, there will be no energy, then you will not able to generate any of the charge particles. तब तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो नाइट में क्या करें, फिर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? यस What point of the sunlight is required for the actual energy production? ओके, सो दैट मैटर्स कि अगर उसमें दो फैक्टर्स आते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे रहे हैं, कितने जनरली सनलाइट की एनर्जी को वी कंसीडर एज अ फोटोन, तो ये नाम लेते हैं फोटोन। तो कितने नंबर ऑफ फोटोन यू आर गिविंग टू द मैटेरियल, तो हर एक फोटोन के लिए एक बोल और एक इलेक्ट्रॉन। So whenever you get one get one, तो it depends कि कितने फोटोन मटेरियल एब्सॉर्ब करेगा, तो इस पे भी डिपेंड करेगा। ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है, यही हमें देखना होता है, यही रिसर्च होती है कि हमें ऐसे मटेरियल ढूंढने होते हैं जो ज्यादा फोटोन एब्सॉर्ब करेंगे, ज्यादा फोटोन एब्सॉर्ब करेंगे तो दे विल जनरेट more electron, and what you have seen in our previous slide, यहाँ पे मैंने इस पिक्चर में बड़े प्यार से, अगर बहुत पहले वाला पिक्चर इमेजिन करोगे, यहाँ पे ज्यादा ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं, मैंने ऐसे दिखाया है क्योंकि ये मटेरियल ज्यादा एब्सॉर्ब करता है इन द प्रेजेंस ऑफ फायर। देयर इज सम प्रॉपर्टी ऑफ दिस मटेरियल जिसकी वजह से इट एब्सॉर्ब मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, देन इट जनरेट मोर नंबर ऑफ कोवलेंट इलेक्ट्रॉन, तो फिर देन तो वाटर रिडक्शन भी ज्यादा होगा, वाटर ऑक्सीडेशन भी ज्यादा होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? थैंक यू, अच्छा क्वेश्चन था, नाइस। So sun and so during the dark period, during the night, हम ये चार्ज करके हाई एनर्जी चार्ज करके जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो then you will not able to convert water into hydrogen and oxygen। तो मेरा डिमांड अगर रात को है तो मुझे हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, तो then what we can do, we introduce a concept that is come because of this issue with, and what are those issues? If you consider about hydrogen जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, 1 kg में एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर है, बट 1 kg हाइड्रोजन के लिए मुझे जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन इज अ गैस। कोल जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, वो लिक्विड मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल होता है, बट ये गैस है, इसके लिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा लगेगा। तो मुझे 1 kg का टैंक बनाने के लिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, एज कम्पेयर्ड टू फॉसिल फ्यूल वाला जो सा था उसको मैं इतने से वॉल्यूम में रख पा रहा था, तो उसका वॉल्यूम एनर्जी वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो काफी लो होता है। दैट इज द वन इशू विद द हाइड्रोजन। देन देयर इज वन मोर प्रॉब्लम विद हाइड्रोजन, दैट हाइड्रोजन बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन। अगर ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल है तो जनरली क्या होता है, जो भी पाइपलाइंस होती हैं, टैंक्स होते हैं, that this hydrogen molecule can penetrate those things, and because of its small size, अगर ये penetrate करता है तो with time बड़ी easily उसमें cracks आने लगते हैं tanks, तो it require very special pipelines और tanks जिससे उस हाइड्रोजन को स्टोर कर पाते हैं। तो सपोज मुझे अगर रात को एनर्जी चाहिए थी, मैं क्या कर सकता था, मैं दिन में हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता था, and then I can store that hydrogen into a tank और रात को मैं यूज कर सकता हूँ ऑक्सीजन। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुझे वॉल्यूम बहुत ज्यादा लगेगा उसको स्टोर करने के लिए, मुझे टैंक्स बड़े स्पेशल लेके आना पड़ेगा, और हाइड्रोजन बहुत ही कम्बस्टिबल गैस है, मतलब बहुत जल्दी से ब्लास्ट होगा, तो प्रॉब्लम हो गया। तो अभी हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ये था फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब हम मूव करते हैं कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। हमने प्रॉब्लम ये सॉल्व किया कि
हाइड्रोजन को मैं जनरेट कर सकता हूँ सी वाटर की प्रेजेंस में भी, बट उसको कैसे सोल्व करें, तो उसके लिए हमने रिक्वायरमेंट, और मुझे अब रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर टाइम पे, मैं उस टाइम पे जनरेट करूंगा हाइड्रोजन। तो मैं हाइड्रोजन हमेशा जनरेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जब जब रिक्वायरमेंट होएगा मैं तब जनरेट करूंगा। तो उससे क्या होगा, हमें वॉल्यूम का टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को तो स्टोर ही नहीं करना अपनी टैंक्स में, मेरे को जब जनरेट क्योंकि यूज करना अभी मेरा डिमांड है, तो मैं उस टाइम भी जनरेट कर रहा हूँ। तो इन दो प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है, बट ऑन साइट फिर भी हम थोड़ा समझ सकते हैं कि मुझे कोलाबा में चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं एक सेल यहाँ लगा दूंगा, कोलाबा लगा दूंगा, सनलाइट आएगी, देन वी विल गेट हाइड्रोजन, तो मिल जाएगा। ऑन साइट प्रॉब्लम फिर भी इजी है, बट ऑन टाइम प्रॉब्लम कैसे होगा, मतलब रात को कैसे मैं जनरेट, तो उसी के लिए हम एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं, डार्क फोटो। तो अभी तक हमने सीखा था फोटो कैटालिसिस, now I'm calling I'm introducing another concept which we are calling a dark photocatalysis. What I mean by dark photocatalysis कि ये जो photocatalysis होगा ये dark में होगा, मुझे लाइट नहीं लगेगा। तो अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे होगा ये, तो उसके लिए मैंने एक छोटे से कार्टून ड्रॉ किए हैं, जहां पे मैंने अगेन दिस इज द लो एनर्जी स्टेट, जहां पे ऐसे हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते थे हाई एनर्जी स्टेट में, सन ने एब्जॉर्ब किया, तो यू विल गेट इलेक्ट्रॉन एंड, अब होता क्या है, when you don't have sun, these charge carrier become ions, तो हमारे पास कोई चार्ज कैरियर ही नहीं होते, तो मैं इनसे कोई भी रिएक्शन नहीं करवा पाऊंगा, इनसे रिएक्शन करवा के मैं हाइड्रोजन से वाटर बना रहा था, वाटर से हाइड्रोजन बना रहा था, वाटर से ऑक्सीजन बना रहा था। तो अभी हमने क्या किया कि हमें तो हाइड्रोजन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए ही, तो व्हाट आई कैन डू कि मैं ये जो होल है इसको निकाल देता हूं, कोई भी रिएक्शन कर, तो रिएक्शन कैसा हो सकता है, कोई भी वाटर ऑक्सीडेशन करा सकता हूं मैं, या फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको मैं ऑक्सीडाइज करा सकता हूं, जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं सिस्टम में। तो होल अगर मैं ले सिस्टम से बाहर निकाल दूं, तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ रह जाऊंगा, तो भी वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तो वापस से रिकॉम्बाइन नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैंने निकाल दिया, तो वो निकाल दिया मैंने, और मैं कोई भी ऐसी मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा सिस्टम में, मैं वाटर नहीं दी दूंगा इनिशियली, जिसको वो वाटर इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन तो मटेरियल पे रहेगा, तो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो मटेरियल के ऊपर ही रहेगा। तो इससे होगा क्या, इन डार्क कंडीशन में, ये तो लाइट के टाइम पे था ना मैंने ये किया, तो विद टाइम धीरे 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 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाई एनर्जी स्टेट में इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। लो एनर्जी स्टेट को तो मैं फिल कर दे रहा हूं, कोई भी इक्वेंचर कहते हैं, डिपोजिट इक्वेंचर, इसके थ्रू, एंड हाई एनर्जी स्टेट में आई एम डंपिंग इलेक्ट्रॉन, तो those electrons are getting accumulated in the high energy state. Now what I can do in the dark, I can introduce water, तो अभी मैंने स्टोर कर दिया उसको डार्क में, एंड देन मेरा जब भी रिक्वायरमेंट है, मेरे को रात को चाहिए, तो मैं ये मॉलिक्यूल के अंदर वाटर ऐड करूंगा, and that water takes that electron, that high energy electron, and it gets converted into hydrogen. So मेरा थोड़ा सा इतना प्रॉब्लम, so that's how we able to solve the time and on time demand problem through this dark process. Okay, okay. Okay. Very nice question. Rohit, please repeat the question for online audience. Okay, so one of the student is there asking कि this hole and electrons both are, how you can control कि which one will go to the water, either the hole or the electron. तो हम इसके लिए एक बड़ी अच्छी चीज करते हैं, ये दो चीजें जो है ना मैंने एक्सप्लेन की, तो ये दो चीजें this thing, and दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन को पुल कर, तो then you can separate those hole and electron, and एक साइड पर सिर्फ hole आते हैं, then that's how you can do the reduction on that particular side, and
of oxidation. Okay, nice. So मैंने बताया कि in the dark now we can do photo accumulated charges because we are accumulating those charges with the help of photon. So all that energy which are these electrons are taken are coming from that's why we call it catalyst. And it's doing it in the dark. That's why we call it a dark. So that's how this whole term is defined. Now, so we can do this water reduction already explained to you, and then we can that is called on-site online demand. Now let us see how we can use this material. अभी तक मैंने बताया ना कि हमें कितना कैसा है क्या है इस material. So this material is made up of carbon and amount is actually covered by the carbon atom. So how you can make this material thinking of this material is very easy. You can take simple urea. You have heard about urea reaction. So urea low and urea is a molecule like this, which contains. And when you heat this urea around 500 degrees, you get this kind of solution. We actually do some characterization also to get to know ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है that is the research in which we do यही स्ट्रक्चर बन रहा है ये कार्बन हाइड्रोजन से ऐसे ही कनेक्ट किए रहेंगे उस नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन रहेंगे तो all those characterizations we do in our career okay that's how we get to know कि हाँ हमें कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है when we are heating urea at 500 degrees Celsius. Now with this particular unit we move further and we heated these molecules in the presence of potassium in the presence of potassium chloride and chloride, and that's how we get this particular and this and making of this material required only 12 hours. So suppose मैंने सुबह morning 9 o'clock का reaction start किया evening में in the night में almost 9 तक मुझे ये material मिल जाएगा. So making of this material is also simple. But there is one challenge I can tell you about this synthesis is the amount. Suppose I started with the 6 gram urea. At the end I have only 250 milligram, 0.2 grams. So मेरा yield बहुत low है. So that is one thing we still need to figure out कि कैसे हमें उसको ज़्यादा amount में generate कर सकता हूँ. बाकी का mass बहुत ही अच्छा. तो इनिशियली इसके अंदर देख लो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है बट इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं तो ऑक्सीजन ब्रेक हो गया तो एक्चुअली यूरिया को हीट जब करते हैं इनिशियली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सम वन थिंग प्लस वाटर तो ये जो H2 एंड O2 है ये बाहर है तो जो H2O2 बाहर निकल रहा है तो मटेरियल का वेट लॉस हो रहा है तो जो वेट लॉस है वो उसमें जा रहा है ओके नाइस तो ऐसे हम ये मटेरियल बना सकते हैं तो हमने डार्क वाटर कैटालिसिस सीख लिया फोटो कैटालिसिस सीख लिया देन इस मटेरियल को बनाना कैसे ये भी सीख लिया देन मैं एक और प्रॉब्लम को बताना चाहूंगा कि ये जो मटेरियल है एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम एंड वो प्रॉब्लम क्या है कि अबाउट सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन है तो वन पार्ट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस पार्ट जहां हमने सोलर एनर्जी को थ्रू फोटो कैटालिसिस अप्रोच convert yes some chemical energy is made by H2 CH4 these all things can also be made but हमने आज सीखा कि हाइड्रोजन कैसे बना सकते हैं but there is one more way to utilize this solar energy जो हमने थोड़ा बहुत सुना that we call solar cell photovoltaic solar cell जो कहीं रूफटॉप पे रीडिंग या देखो काफी इंस्टॉल कर रहे हो तो वो solar cells actually convert this solar energy into an electrical energy. And that electrical energy can run your fan, light, everything. Yes. But there is a problem with normal solar cells because the solar panel, when you can't, it lasts for about 5 to 25 years, most last for about 10. Okay. But after that 10 years, it just goes to a landfill or the mechanisms inside that particular solar cell get released into that part.
Yes, that's true. बड़ा अच्छा स्टूडेंट है वो, you know anything. So interesting. अच्छा point है. Sorry, but this is one thing. Actually, we have to standard one thing. Okay. Your voice online is cracking. Okay. Sorry for this. No issue. So that's a good question. मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तुमने ये प्रॉब्लम नहीं डिफाइन कर, और कुछ प्रॉब्लम हम अगली स्लाइड में मैं डिफाइन करने वाला हूं। एक प्रॉब्लम सबको पता लगा ना कि सोलर सेल में मटेरियल लगता है और वो मटेरियल भी डिग्रेड होता है विद टाइम, तो देयर इज द प्रॉब्लम कि मटेरियल का स्टेबिलिटी नहीं है, दैट मींस कि वो मटेरियल स्टेबल नहीं है विद टाइम। तो हम बताते हैं और भी क्या होते हैं इसके अलावा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट की सोलर सेल के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम इज द इंटरमीडिएट नेचर ऑफ द सोलर एनर्जी। व्हाट आई मीन बाय दैट अगेन कि दिन में तो मुझे सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, बट फिर से रात में मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा। तो then what we can do, let's first understand before that ki why you don't get, why you are not able to generate electricity during the day, during the night. So this is a kind of picture. You can see these are the solar panels which are made up of silicon. Actually silicon is one more material, and जब ये सिलिकॉन मटेरियल जो होता है इसके अंदर हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब दो साइड्स होते हैं। यू कैन इमेजिन कि उसके दो साइड होते हैं, एंड व्हेन यू शाइन द लाइट ऑन दिस थिंग अगेन इट जनरेट इलेक्ट्रॉन एंड these high energy charge, electron and hole, and because of these high energy charge carrier you get a potential difference. तो अगर हम दो एंड पे एक इस एंड पे और एक इस एंड पे कुछ भी प्लग कर देंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिला होगा, चार्ज कैरियर मिला होगा, मेरा कोई भी चीज रन होगा। आई कैन रन माय फैन, लाइट, यू नो। तो इसी को मेजर करने का एक तरीका होता है, ये एक एक्सपेरिमेंट जो हमने किया। इसमें क्या किया हमने कि इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया वोल्टमीटर से, और जिससे हम पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, मतलब इन दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज टाइम एक्स, टाइम के साथ मेजर कर रहा हूं कि मैं पोटेंशियल कितना है। तो इनिशियली यू सी ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल था बिफोर शाइनिंग द लाइट, और मैंने इस पॉइंट पे लाइट इरेडिएशन स्टार्ट किया, तो देन दिस पोटेंशियल शूट्स आउट, और ये बहुत हाई पोटेंशियल पे गया अराउंड 550 मिलीवोल्ट, एंड देन इट स्टेज देयर, यहां पे बिल्कुल लाइट। बट व्हाट हैपेंस कि जब मैं लाइट स्विच ऑफ करता हूं दिस पोटेंशियल ड्रॉप्स ऑन इमीडिएटली। तो मैंने जैसे ही लाइट ऑफ किया, जैसे ही लाइट स्विच ऑफ किया, मेरा सिलिकॉन सोलर सेल में कोई पोटेंशियल नहीं, समझा। दिस इज द प्रॉब्लम। अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं होगा तो यू विल नॉट गोइंग टू गेट एनर्जी। इसी वजह से हमें जैसे ही लाइट ऑफ करते हैं कोई भी पोटेंशियल या कोई भी एनर्जी नहीं मिल सकती। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? उस प्रॉब्लम को सॉल्व हम करते हैं, वी कैन कपल आवर सोलर सेल विद बैटरी। नो बैटरी, हमारे फोन में बैटरी है, लैपटॉप में बैटरी है, जिससे फोन चलता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी से प्लग किए हुए बिना फोन चलता है। क्यों? क्योंकि तुमने एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उस बैटरी के अंदर स्टोर कर लिया, एंड नाउ यू आर यूजिंग दैट स्टोर्ड एनर्जी टू रन योर मोबाइल फोन। So that's how you can do the harvesting and the storing. This is the current scenario. This is the current picture how we are right now utilizing solar energy. We need a solar cell and a battery. We just couple those two things. Then we can do both the harvesting and the storing. But now the issue with this thing is I need a separate material. एक मटेरियल यहाँ पे चेंज सिलिकॉन का उसका कोई भी मटेरियल है सोलर में बना देते हैं उससे मटेरियल। तो ये मटेरियल हमें एक सेपरेट मटेरियल चाहिए। बैटरी के लिए मुझे सेपरेट मटेरियल चाहिए। बैटरी जनरली जो बैटरी हम यूज करते हैं दो बार पहले वो लिथियम आयन बैटरी, सो इट कंटेन लिथियम आयन एंड सम अदर इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज, सम मटेरियल। तो we need different kind of material for the battery and different kind of material for the solar cell. So we need completely different material जो दोनों काम करेगा। But what we want, can we do these two functions within a one single material? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही मटेरियल में हार्वेस्टिंग भी हो एंड देन स्टोरिंग भी? स्टोरिंग पार्ट में एनर्जी चार्ज करेगा, बट ये सेम मटेरियल करेगा।
तो इसी चीज को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ ऑलरेडी, बट मैं उसको थोड़े अलग वे से दिखाने वाला हूँ। याद है ये स्कीम? यहाँ पे मैंने दिखाया था कि अगर मैं इंचार्ज ले लेके रिकॉम्बिनेशन को रोक दूं, उसको रोकूंगा कैसे? होल को ऑलरेडी को इंच कर दूंगा, होल को रिमूव कर दूंगा, देन आई विल लेफ्ट विद ओनली दैट साइड इंचार्ज। What we are doing right now with this particular approach also, we are shining the light, generating those energy charge carrier, and we are accumulating those charge carrier into the material itself. तो अगर तो मतलब उसी एक मटेरियल के अंदर मैंने उन हाई एनर्जी चार्ज कैरियर को स्टोर किया हुआ है, बट फिर इंपॉर्टेंट है कि ये स्टोर कितनी देर करता है। अभी मैं स्टोर अगर 5 मिनट कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम है, इतने में तो मैंने कोई यूज ही नहीं हो पाएगा, 5 मिनट तो बहुत ही घंटा है। तो इसका एक सिग्निफिकेंट टाइम नहीं होना चाहिए जिस टाइम तक मैं उस एनर्जी को स्टोर कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए हमने वही एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया इस चीज को मेजर करने के लिए, वही पोटेंशियल वाला एक्सपेरिमेंट। वहां पे हमने पोटेंशियल मेजर में हमने क्या पोटेंशियल बिफोर शाइनिंग द लाइट मैंने देखा बहुत ही लो पोटेंशियल, जैसे लाइट शाइन किया पोटेंशियल अगेन शूट कर, एंड एक्सिस को अगर देखोगे तो ये जो पोटेंशियल है ये -300 मिलीवोल्ट के होगा, जो सिलिकॉन सोलर सेल की पोटेंशियल से दिखा रही है, and it stays somewhere, and at this point we switch off the light, and then see हमने लाइट को स्विच ऑफ किया, पोटेंशियल रुक गया, मतलब डिके पर बहुत स्लो है कंपैरेटिव सिलिकॉन वाला है, अगर याद हो उसमें इमीडिएटली ड्रॉप हुआ। और एक और चीज है जो तुम्हें देख लीजिए ध्यान से, वो है एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस है मिनट्स में, वहां जो एक्सिस है वो सेकंड्स में, वो ड्रॉप्स डाउन सेकंड्स में, यहाँ ये स्टेज किया उसने मिनट्स तक। यू सी मैंने 20 मिनट का लाइट रेडिएशन किया, ऑलमोस्ट 60 मिनट्स हो चुके हैं, फिर भी मेरे पास पोटेंशियल मतलब 40 मिनट्स तक उसने पोटेंशियल को होल्ड किया हुआ है। बट हमने फिर एक्सपेरिमेंट आगे किया, ये तो अभी डिके नहीं हुआ ना, लेट्स सी कि कितनी देर स्टोर कर सकते हैं। Then what we have observed कि almost about now this axis in hours, this material store the charge like 18 hours का store करके रखा हुआ है। तो that means कि ये material पे जब तुम light shine कर रहे हो, फाइनल चार्ज के material बदल रहे हैं, then the material same material हमें दूसरा material नहीं बदल रहा है, वही सेम मटेरियल को होल्ड किया हुआ है तो लाइक 18 आवर्स, एंड ये बहुत ही रीजनेबल नंबर है। तो हमें दिन में हम चार्ज करेंगे रात को कभी यूटिलाइज कर सकते हैं। So that's how you can achieve this particular thing which we call a solar battery, a battery which can be charged by the sunlight directly. Imagine हमारे पास फ्यूचर में क्या हो सकता है कि हमारे पास एक फोन है, सेल फोन है, उसमें हमने बैटरी स्टोर की है, एंड अगर हमें चार्ज करना है, मेरे पास आसपास इलेक्ट्रिसिटी है, बट अगर सन है तो आई कैन गेट द फोन अंडर दैट सनलाइट, यूज इट इन कार आल्सो। जैसे ड्राइविंग हो रहा है, यू कैन ड्राइव इन सिविलाइज ड्राइविंग में इसको यूटिलाइज कर रहा है, बट बिकॉज़ सनलाइट आएगा आसपास या चार्ज नहीं होता, so that's how you can solve okay. So that's a good question. I can explain that question right now actually. So the thing is ये जो मटेरियल हमें स्टोर कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन स्टोर कर रहा है एनर्जी, ये स्टोर कैप्चर किया जाता है अगर वो एयर के कांटेक्ट में आए। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है आसपास तो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है, रिएक्शन होता है। तो हमें जो रिएक्शन करना पड़ता है एक इनर्ट में करना होगा। इनर्ट से मतलब मेरा है कि जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। तो अगर मैं सिर्फ नाइट्रोजन से फिल कर दूं किसी चीज को, नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में अगर अभी टू दिन मिल रहा है तो मुझे ये मिलता है स्टोरेज। यू गेट माय पॉइंट? बट अब होता क्या है कि सारे सिस्टम कंप्लीटली सील नहीं पाते। कंप्लीटली सील मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट ही होता है। तो विद टाइम जो ये तो डिके दिख रहा है ना, स्लो डिके, ये दिख रहा है कि ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट है, एंड हम बड़े बड़े अच्छे तरीके से मेजर किया है कि हम ऑक्सीजन का अमाउंट बड़ा डिके फास्ट हो जाता है और बड़ा तो फास्ट हो जाता है।
बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में तो ये देखिए बहुत फास्ट हो जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन अमाउंट इट इज आफ्टर 18 hours के बाद देखिए Rohit, there is an online question. Saurabh Wakande बोल रहे हैं. Is there any limitation to the capacity of storage in these kind of batteries? Okay. And what is the lifespan of these batteries? very nice question. अगली ही स्लाइड मोस्ट प्रोबेबली अगली नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड वही मिलेगा उस चीज का आंसर। सो दैट थिंग्स उसके लिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देते हैं। तो उसके अलावा अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि हाँ हम ये स्टार्च को स्टोर कर सकते हैं 18 आवर्स तक बैटरी बन सकता है। बट अभी भी कोई प्रॉब्लम फेस कर सकता है तो हमें सारे प्रॉब्लम देखना तो उसके लिए अभी फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हमने क्या किया और उसके लिए जो हमारे पास फ्यूचर डायरेक्शन जिसमें हमें कर रहा है। तो अभी तक हमने जो वर्क किया है ना वो वर्क किया है हाफ सर्किट। व्हाट आई मीन बाय हाफ सर्किट, ये है नॉर्मल बैटरी सिस्टम बैटरी सी तो हमने निकाला है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। वन ऑफ द इलेक्ट्रोड स्टोर पॉजिटिव चार्ज, वन ऑफ द इलेक्ट्रोड स्टोर नेगेटिव चार्ज एंड फिर उनको हम कनेक्ट करते हैं इसी लोड से देन हमें वापस पावर मिलता है। तो ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो रहे हैं सब इलेक्ट्रोड। बट हमने हमारे सिस्टम में अभी तक क्या किया है बाय शाइनिंग द लाइट एक इलेक्ट्रोड पे हमने इलेक्ट्रॉन को स्टोर कर दिए बट वो तो हमने स्टोर की वो तो हमने निकाल ली कोई रिएक्शन कर दी तो वो तो पहले नहीं तो राइट नाउ व्हाटएवर आई टोल्ड यू ना वो हाफ सेल के बारे में मैंने अपना हाफ सेल बना दिया। अभी मुझे अपना हाफ सेल और बनाना है तो दोनों सेल बनेंगे देन आई विल कंबाइन दोस हाफ सेल and I will make the full and that can work getting तो अभी हमें ये सभी ये रिसर्च करना देन जो क्वेश्चन अभी उन्होंने पूछा कि कितना चार्ज स्टोर करते हैं तो लेट मी गिव अ नंबर कैसे मेजर करते हैं कि कितना चार्ज स्टोर करते हैं। तो दैट चार्ज जो स्टोर करते हैं 20 मिनट के अंदर हम एट 8 mAh पर ग्राम है मिली एम्पियर आवर पर ग्राम। मिली एम्पियर आवर मींस कूलम कितने कूलम चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम से इलेक्ट्रॉन्स पे 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 into 10⁻⁻90 कूलम का चार्ज और ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने 30 कूलम पर ग्राम स्टोर किया। तो आई कैन मेजर कि मैंने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टोर किए। तो विद इन 20 मिनट मैंने 10 raised to the power 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टोर किए हैं 1 ग्राम से विद इन 20 मिनट। ये 20 मिनट का लाइफ रेडिएशन 8 mAh का है। बट जो लिथियम आयन बैटरी जो एग्जिस्ट कर रही है कमर्शियलाइज्ड बैटरी लिथियम आयन बैटरीज कमर्शियलाइज्ड हुई 1990 में मतलब उनके बाद कमर्शियलाइज्ड होने के बाद भी उस चीज में 30 इयर्स का रिसर्च हुआ है जिसमें उसको और इंप्रूव किया है उसका जो कैपेसिटी है वो 150 मिली एम्पियर आवर पर ग्राम है। तो ये नंबर अभी भी हमारे से ऊपर है बट स्टिल क्योंकि ये तो अगर बहुत ही रिसेंट स्टेज में है तो it can go it shows promise we can achieve those numbers तो वो और भी हमें करना है कि हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके and the one more important thing is about the recharge level। मैं अपनी बैटरी को चाहूंगा कि एक बार रिचार्ज किया वो डिस्चार्ज हो जाएगा मैं फिर से रिचार्ज एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने क्या किया पहले लाइट चार्ज किया देन चार्ज किया देन डिस्चार्ज किया चार्ज डिस्चार्ज एंड जब चार्जिंग हो रहा है तो सनलाइट से हो रहा है हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं कर सकते तो सनलाइट से चार्ज करते हैं देन डिस्चार्ज करते वक्त हम मेजर करते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में स्टोर किया। रिमेंबर दैट 8 mAh per gram you see it almost stays there। तो मतलब मैंने 10 साइकिल्स किए यहाँ पे तो अप टू 10 साइकिल माय मटेरियल इज कंप्लीटली स्टेबल। मैं इसको बार बार चार्ज डिस्चार्ज करूँ ओके बट स्टिल नंबर को बहुत बार चार्ज करते हैं बार चार्ज करते हैं तो ये नंबर अभी भी बनाने की जरूरत है। तो दैट पार्ट आल्सो इज नीडेड एंड one more thing
Okay, so the last thing is the regeneration. तो जैसे उन्होंने बोला कि मटेरियल तो डिग्रेड हो जाता है, सिलिकॉन डिग्रेड हो जाता है, तो जब सिलिकॉन डिग्रेड होता है ह्यूमन सिलिकॉन को फिर से हम रीजनरेट करते हैं। देयर आर केमिकल प्रोसेसेस जिसके थ्रू फिर से हमको रीजनरेट किया जाता है। तो किसी चीज में वो विजिबल हो पाता है, किसी में नहीं हो पाता, वो डिपेंड करता है क्या कहते हैं डिग्रेड कैसे। So that part we also still need to understand कि मटेरियल डिग्रेड होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो कैसे डिग्रेड होता है, then we need to find the solution कैसे। So these are the four kind of research direction I propose to you जो हमें अभी explore करनी है, okay, and then we can achieve this solar battery thing जहाँ पे complete solar battery जिसको हम सन से directly charge कर सकते हैं। Thank you. No. Okay. So, there is no like. Yeah. All right. So are we ready for the demonstration? Okay. Now it's time for a demo. You will see whatever you said. Let's see it in action. So you want my help or you manage? मैंने क्या बताया कि जब लाइट शाइन करता है तो हाई एनर्जी लाइट। तो एक इंटरेस्टिंग चीज है इस मटेरियल के बारे में। इनिशियली दिस मटेरियल लुक्स येलो you see this yellow color initially this material Okay, now we show it to the light, show it to the camera also. Light audience. तो yellow material initially ये मटेरियल फोर शाइनिंग कर रहा है, ओके, जब ये चार्ज नहीं येलो से, बट ये मटेरियल जैसे ही चार्ज होने लगता है ना विद टाइम वी कैन सी विद आवर आईज, जैसे ये मटेरियल चार्ज होने लगता है धीरे धीरे अपना कलर चेंज, बिकॉज़ नाउ दिस मटेरियल इज स्टोरिंग दोस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, एंड जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्टोर करता है उन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कुछ अलग है फंक्शन, इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन में अलग कलर है, तो दैट कलर इज ब्लू। तो मैं अगर इस मटेरियल पे लाइट शाइन करूंगा तो ये मटेरियल ब्लू टर्न्स करना चाहिए, ओके। नाउ लेट्स सी कि वर्क करता है कि नहीं। तो डू यू नो कि कोई भी चीज येलो या फिर ब्लू क्यों दिखती है? Nice. Never to think what goes. It's a better light to Nice. जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतना ज्यादा मुझे देर लाइट को मटेरियल ज्यादा है तो उसको चार्ज भी ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं होगा फोटोन देने पड़ेगा। तो विद टाइम धीरे-धीरे इसमें चेंज कर रहा है। You want me to go to color changes? In some extent, you can see even right now there is a difference. You see, if we going to irradiate for even longer time, this will turn to अभी इसमें blue और yellow दोनों हैं, तो then combine होके हमें एक color दिख रहा है। Getting? Camera को दिखाने के लिए। Sir, only sir. Right. Okay, bye. So it is in front of the camera, so that light audience gets to see. So this is why we don't have to submit. So this one is the charged material. Now it's somewhat looks like blue to me, and this is before shining the light. You see, this one is before shining the light, and this one is after shining the light. So we'll charge this material for 5-10 minutes. And Yeah, any other thing? no. Okay, all right. So, and we'll let this process happen. We'll continue with this process. Then we will discuss few things about this process. So, live audience gets a tea now, and then we'll come back as usual and the speaker will be with you for all the questions you wish to ask.
and this announcement. The next challenge one that will happen at 50 and Professor Jayaraj Chendur will talk on listening to the universe. So that will be the session number 401 of challenge one. And as I mentioned earlier, next Sunday TIFI will be open for visits. So do visit TIFI and enjoy thanks. Thank you. Yeah, and just one minute, I forgot to thank him for that. Thank you for that. Please have me now. Instrument.